छात्र हैं, तकनीकी शिक्षा के योग्य हैं, जिनके भीतर संभावनाएं भरी हुई हैं, जिन्हें सिर्फ अवसर की तलाश है, उनके लिए KIPM संस्थान उत्तम है। वो अपने जीवन का लक्ष्य यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं और अपनी सभी सेवाएं देश और विदेश में दे सकते हैं। KIPM बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए पूर्वांचल में एक आस के साथ, एक विकास के साथ अपने कदम बढ़ाता हुआ, ऐसा KIPM को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पे ले आकर इनका रिप्लेसमेंट भी करा रही है और आज बच्चे जगह जगह उसको सर्विस, विदेश में भी बच्चे यहाँ की सर्विस कर रहे हैं। कोई अगर बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो मैनेजमेंट को मैंने देखा कि बड़ी सरलता के साथ एक अभिभावक के रूप में उन्हें पूरी तरह से शिक्षा से वंचित नहीं करते हैं। यही खासियत है और यही आज के युग में यही शिक्षण संस्थाओं का कार्य होना चाहिए। Very nice KIPM Institute मिला, very good. All the boys, good luck, and it's a good technical place and bright future to all of you. जीवन में आपको परिपक्व होना है संपूर्ण रूप से। आप टैलेंट पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप में टैलेंट है तो गोरखपुर में KIPM ट्रेंड हो के आप लाइफ में कैन गो हेड इन लाइफ एंड डू इट। जैसे हम भी एक देहात से जौनपुर से निकल के यहाँ पे पहुँचे, तो यू गाइज ऑल्सो कैन डू इट एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। KIPM was awarded the Education Excellence Award from Dr. Bhuta Singh, ex-Home Minister, Government of India, and the Best Institute Award by renowned author Mr. Chetan Bhagat. The saga of laurels continues with International Education Excellence Award at Bangkok, Thailand, and India National Achievers Award for Social and Public Service at Singapore. KIPM received the Shiksha Gaurav Samman for Quality Education and 100% placements from Professor Kripa Shankar, the erstwhile Vice Chancellor of UP Technical University, and Shri Ani Sansari, the Vice Chancellor of Urdu and Farsi University, Lucknow. KIPM also received the Udyamita Samman Award for Quality Education and Placements from Shri Shivpal Singh Yadav, Honorable Minister of PWD and Irrigation of the Uttar Pradesh government. KIPM has also been awarded the Educational Excellence Global Award from Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan at Dubai.